Hello everyone, welcome to OASHUB. So, in this small lecture, we will discuss about the longest flyover of Odisha. So, Odisha longest flyover कोठी होची जोड़ा टाउन केउझर. तो सब इम्पोर्टेंट कथा होची कि हमरो longest because न तुम के बाकी ये facts कौन पे दरकार. This facts is required because first of all this is the longest flyover unveiled in the what minerals rich town of जोड़ा and that to be the केउझर Odisha. प्रथम कथा हला दैट मीन्स आम जहाँ केउझर कौचे द मिनरल कैपिटल ऑफ ओडिशा एंड दिस इज द केउझर टाउन तुम देखिपार दैट इज द जोड़ा टाउन जो जोड़ा टाउन ठीक बीचो बीच ये जाऊँगी ना ये टाउन्स ये ब्रिज कौन पे कराई दिस फ्लाईओवर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर द स्मूथ मूवमेंट कौन करा फॉर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ मिनरल ट्रक्स जो हमारा ट्रक्स गुड़ा जाऊँगी दोज ट्रक्स आर पासिंग थ्रू दिस रीजन्स they're exactly facing difficulties because and the congestion and some sort of accidents भी बहुत टाइम accidents होते हैं to prevent the accident जदि हमें देखिबा accident को prevent करिबा to have the easy movement that means हमें जदि केबा easy movement ही परिबो जो ट्रक गुडा रही खास करी तमे जानते smooth movement हवा दरकार so that the ease of doing business activities in the state will also grow and the total minerals transportation होची that mineral transportation will also increase so that is why this has been constructed obviously हमें देखिबा जोड़ा टाउन केउझर now here you can see तो पूरा टिके डिटेल्स रे देखिबा हमें डिटेल्स रे जितना हम डिस्कस करूचे the Odisha Bridge and Construction Corporation first की आकु करिछि Odisha Bridge and Construction Corporation constructed जतमे construction started it was 2020 रे start हितला 4 kilometer and 487 meters starts from the NH 552 to that is Sarangkul Chowk. The reason entire stretch हमें देखिबा कि 4 point almost half kilometer हमें देखिबा reports. So as per the reports हमें देखिबा 2.9 kilometer long flyover has been built cost of 250 crores which is provided from the district mineral fund and this is very crucial. The crucial things here you have to remember to facts is that UPSC BM देखिबा districts mineral fund already UPSC पचारिछि कि that means हमर एथे दीटा मकसद देख लेक्चर रे बा ए लेसन रे हमको कोन मिलिबो फर्स्ट ऑफ कथा DMA fund second longest bridge then why this bridge now comes to the हमें देखिबा कंस्ट्रक्शन जो काम स्टार्ट हेतला जो फ्लाईओवर्स कथा देखले तारा हमें लेंथ देखि दैछे and NS 552 that is Sarangkul Chowk को कनेक्ट करूची width केते होची 5.5 मीटर width रहिची that can carry maximum loads 400 tons तो 400 tons रो maximum load से नहीं परिबो that comes to the DMA fund the DMA fund to जो पैसा खर्च होईची that means जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन पई जोटा में डिस्कस करथले तो ये DMA fund टिके obviously UPSC prelims मध्ये आगो को रहिची तो इंपोर्टेंस रहइबो. So Odisha has framed that is the district mineral fund foundations as per the rules 2015 under the provision of the section B of that is but minerals amikeba that is but like PM Khanij Kshetra जो अमर कहिछि and the minerals act that means amikeba 1957 under ऐसे. The scheme is there also that is the प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना अर्थात आम कहबा सो जो ये जो तुम मिनरल्स डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ये सबु राज्य बा जोरो दैट मीन्स ध्यान से सुनिबो सेथरे तुमको ऑप्शन है ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑल द यूटीज आर हैविंग द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड नो only those state and UTs having the minerals they will frame this kind of mineral other TMF fund under the chairmanship of district collector. तो DMA फंड कहीं होता है प्रथम कथा देख DMA फंड कौन आसूची ना आमर जो मिनरल्स एक्ट अच्छे 1957 अंडर कौन पे कराए सपोज भाव केउझर डिस्ट्रिक्ट आम कहे ये जहाँ मिनरल्स बा माइनिंग होची तार किसी गोटे परसेंट आम कौन कर DMA फंड को दि जाव कारण से एरिया मिनरल्स नहीं कि तो पड़े गले आउ कौटी डेवलपमेंट हम बट ये एरिया लोक मान कौन हो इकोनोमिक लॉस हो सो दैट पॉल्यूशन वगैरह भी होची ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कथा नहीं जाओ हीट वेव्स कथा नहीं जाओ पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन कथा नहीं जाओ वाटर पॉल्यूशन कथा नहीं जाओ से कौन कर रूल्स टेन्स ऑफ द DMF रूल्स अनुसार कि जो पैसा किछि पैसा जो माइनर्स माने अच्छे से माने देबे
so that से जो ट्रस्ट गोटे करा इट्स अबाउट ट्रस्ट आर टू बी यूटिलाइज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आम कह एक्टिविटीज जमती हाई प्रायोरिटी एक्टिविटी जमती से रोड कथा नहीं जाओ हेल्थ केयर कथा नहीं जाओ एजुकेशन कथा नहीं जाओ वेलफेयर ऑफ द वुमेन चाइल्ड स्किल डेवलपमेंट कथा नहीं जाओ तो सही एरिया जो एरिया रू मिनरल्स टाकू एक्सट्रैक्ट करके पठा जाउची से एरिया रो लोकल लेवल रो डेवलपमेंट पाई किसी पैसा सेटा करा जो कटे ट्रस्ट को रखा जाउची जोटा कि आम कहते डीएमए फंड तो सही पांठी रू ही पैसाटा खर्च करा जोटा आम डिस्कस कले डीएमए फंड तो कौन खर्च हम रोड पे खर्च हम ओके दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हम हेल्थ केयर पे एजुकेशन वेलफेयर फॉर वुमेन चाइल्ड हाउसिंग ये खर्च हम सो दैट इज वाई दिस थिंग्स आर ऑब्जेक्टिव कौन डीएमए फंड आम कह कि टू मिनिमाइज द मिटिगेट द आडवर्स इंपैक्ट जोटा मुझे कहली कि से एरिया रू जिते आम मिनरल्स टाकू डाइवर्ट करूचे तो से एरिया लोकों ऊपर इंपैक्ट पड़ुचे ना तेणु करके डीएमए फंड जो होचे ना से कौन करा कि से जो मनी टाको कलेक्ट करा दैट वुड बी यूटिलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल एरिया डेवलपमेंट हो पारिबो तेणु जितेबाला तुम ओडिशा बा ओपीएससी बा यूपीएससी रे लिखुच रीजनल डिस्पेरिटी रीजनल डिस्पेरिटी को कमेबा दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप आम लिखिपर कि हाउ दिस मिनरल रीजन्स एंड द ट्राइबल रीजन वुड बी डेवलप्ड एंड दैट इज वन सॉर्ट आई वुड से द सैनिटेशन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट these things are irrigation infrastructure energy bridges so that is why this bridge जो हम longest bridge मध्य हम कहबा the connect जोटा तुम्हारा तैयारी करा जाइछि so some of the money is been also spent for the construction of this longest flyover bridge of Odisha तो ये गोटे small lecture थिला we have started मतलब हमर जो फर्स्ट मे रु समर बैच स्टार्ट होछि जो माने एनरोल करिया कथा त माने एनरोल कर देबो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दिया जाइछि थैंक यू एवरीवन।